नमस्कारः। वार्तावल्याः अस्मिन् तृतीये अङ्के भवतां सर्वेषां स्वागतम्। अहमस्मि ज्योतिः, मया सह विद्यते सुनीलजोशी। अहमपि सादरम् अभिनन्दामि सर्वानपि दर्शकान्। भवद्भिः तु श्रुतमेव यत् सर्वे गुणाः काञ्चनम् आश्रयन्ति, परञ्च मन्मते तु एतत् अंशतः एव सत्यं। वस्तुतस्तु विद्या धनम् एव सर्वधनप्रधानम्। अस्माकम् अद्यतनं सुभाषितमपि शिक्षयति ज्ञानमेतत्। विद्या नाम नरस्य रूपमधिकं प्रच्छन्नगुप्तं धनं। विद्या भोगकरी यशः सुखकरी। विद्या गुरूणां गुरुः। विद्या बन्धुजनो विदेशगमने। विद्या परा देवता। विद्या राजसु पूज्यते न तु धनम्। विद्या विहीनः पशुः। विद्या मनुष्य के सौंदर्य को बढ़ाती है तथा छिपा हुआ गुप्त धन है। विद्या भोग, यश और सुख को प्रदान करने वाली गुरुजनों की भी गुरु है। विदेश जाने पर विद्या बंधु के समान है। विद्या परा देवता है। विद्या ही राजाओं में पूजनीय है, धन नहीं। विद्या विहीन व्यक्ति पशु के समान है। सत्यमेव श्लोकोऽयं विद्ययामृतमश्नुते इति श्रुतिवाक्यं प्रमाणयति। आम्, सत्यमुक्तम्। यतः विद्यार्जनाय जनाः सुदूरमपि यान्ति, परिश्रमं कुर्वन्ति, ज्ञानम् अर्जयन्ति। यथा थाईलैंड देशे सद्यः सम्पन्ने विश्वसंस्कृतसम्मेलने वैदेशिकाः अपि समागताः। ते स्वमातृभाषाम् अतिरिच्य संस्कृते निहितविद्याम् अवाप्तुं सोत्सुकाः सन्ति। तर्हि शृण्मस्तावत् केन्द्रजप्रभागे तेषां विचाराः। नमो नमः। इदानीम् अहम् एकं श्लोकं वदामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या त्रिविङ्गा त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। संस्कृतभाषिणां बहुजनानां मध्ये अहं महन्तं प्रमोदम् अनुभवामि। संस्कृतस्य अध्ययनं कथं करणीयम् इत्यादि विषये विस्तारेण चर्चा अभवत्। अथवा भारतदेशे संस्कृतस्य अध्ययनं हिन्दीभाषा अथवा आङ्ग्लभाषायां भवति, किन्तु इतः संस्कृतस्य पाठनम् अध्ययनं संस्कृतेन एव भवेत् इति अपि विषये चर्चा अभवत्। एतत् श्रुत्वा अहम् आनन्दितोऽस्मि। जैसा कि आपने देखा, संस्कृत अब मात्र एक भारतीय भाषा या भारतीयों द्वारा प्रचारित किया हुआ एक भाषा मात्र नहीं रहा। आज संस्कृत धीरे धीरे एक विश्व भाषा का रूप धारण कर रहा है और संस्कृत का जो है स्वीकार्यता पूरे विश्व में बढ़ रही है। कैमरामैन जगपाल सिंह के साथ मैं केजी सुरेश, विश्व संस्कृत सम्मेलन बैंकॉक में, दूरदर्शन न्यूज़ के लिए। भवद्भिः विलोकितः पाश्चात्य पौरस्त्यजनानां संस्कृतं प्रति कीदृशः अनुपमः प्रयासः। एते न केवलं संस्कृतम् अधीयते अपितु स्वीयदेशे भाषामिमां पाठयन्ति प्रसारयन्ति च। केन्द्रजप्रभागे एव प्रस्तूयन्ते सम्प्रति प्रवाहिवार्ताः, यत्र हि देशविदेशेषु प्रवर्तमानाः सम्पन्नाश्च साप्ताहिकमुख्यवार्ताः प्रस्तूयन्ते।
शंघाई सहयोग संघटनस्य शिखर सम्मेलनम् अतिरिच्य प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी उफानगरे पाकिस्तानप्रधानमन्त्रिणं नवाज शरीफम् अमिलत्। प्रधानमन्त्री सार्क शिखर सम्मेलने सहभागी भवितुम् आगामिनि वर्षे पाकिस्तानं गमिष्यति। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी रशिया देशस्य उफा नगरे सप्तमे ब्रिक्स सम्मेलने शंघाई सहयोग संघटनस्य उपवेशने च उपातिष्ठत्। प्रधानमन्त्री ब्रिक्स राष्ट्राणां सहयोग संवर्धनार्थं प्रत्यपादयत्। शंघाई सहयोग संघटनेन भारतं पूर्ण सदस्यत्वेन आभ्यन्तरीकर्तुं विनिर्णीतम्। सम्प्रति चीन, रशिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान देशाः पूर्ण सदस्यरूपेण विराजन्ते। प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्र मोदिना कजाकस्थानस्य राष्ट्रपतये भारते समुद्भूतैः धर्मैः सम्बद्धग्रन्थानाम् एकं स्तवकम् उपायनीकृतम्। एषु हिन्दू, बौद्ध, जैन, सिक्ख धर्मविषयकेषु ग्रन्थेषु 8सहस्रिका प्रज्ञापारमिता, कल्पसूत्रं, रामायणं चान्यतमाः सन्ति। सर्वोच्च न्यायालयेन शास्ति प्रदत्ता यद् अविवाहिता जननी शिशोर्जनकस्य सहमतिं विनैव शिशोः एकमात्रं विधानसम्मता अभिभाविका भवितुम् अर्हति। एकस्याः अविवाहितायाः जनन्याः याचिकाम् आश्रित्य वादश्रवणं विदधता न्यायालयेन एवं शास्तम्। मध्यप्रदेशे चर्चितस्य व्यापम प्रवञ्चना प्रकरणस्य केन्द्रीयान्वीक्षण विभागेन अन्वीक्षणम् अध्यर्थितम्। परितः प्रवर्धमानस्य आपीडस्य अनन्तरं मुख्यमन्त्रिणा शिवराज सिंह चौहानेन अन्वीक्षणाध्यर्थना कृता। PSLV-C 28 इति प्रक्षेपणयानेन ब्रिटेन देशस्य पञ्चोपग्रहाः सौरसमकालिककक्षायां संस्थापिताः। सर्वेपि उपग्रहाः श्रीहरिकोटा स्थलस्य सतीश धवनान्तरिक्षकेन्द्रात् प्रक्षेपिताः। केन्द्रेण न्यूनतम दैनिक पारिश्रमिकेषु प्रतिशतं प्रायेण 17 मिता वृद्धिरापादिता। सम्प्रति न्यूनतमः दैनिक पारिश्रमिकराशिः 6,100 मितो भविता। केन्द्रप्रशासनेन सर्वाण्यपि राज्यानि न्यूनतम दैनिक पारिश्रमिके संशोधनम् आपादयितुं निर्दिष्टानि। IRCTC समवायस्य अन्तर्जालीय सङ्केते यात्रिणः अधुना आङ्ग्लभाषायाम् इव हिन्दीभाषायामपि रेलयात्राधिकारपत्रम् अधिगन्तुं प्रभविष्यन्ति। रेलमन्त्री सुरेश प्रभुः राजधानी दुरन्तो प्रभृतिषु रेलयानेषु सन्देशसेवां चलदूरभाषमाध्यमेन अनारक्षितस्य रेलयात्राधिकारपत्रस्य प्राप्तिसेवां चारब्धवान्। भूतलात् नभसि प्रहारकं स्वदेशीय प्रविधिभिः निर्मितम् आकाश प्रक्षेपास्त्रं भारतीय वायुसैन्यबले समावेशितम्। एतत् प्रक्षेपास्त्रं DRDO भेल इति संस्थाभ्यां विनिर्मितम्। विद्यालयछात्रेषु गणितशास्त्रे विज्ञानविषयेषु च अभिरुचिं संवर्धयितुं देशे राष्ट्रियाविष्काराभियानम् आरब्धम्। छात्राः रुचिसंवर्धकरीत्या गणितं, विज्ञानं च अध्येतुं प्रेरयिष्यन्ते। राष्ट्रपतिना श्री प्रणव मुखर्जिना सिकंदराबाद नगरे नक्षत्रवाटिका समुद्घाटिता। वैदिकखगोलविद्यायाः श्रीचक्रानुरूपम् अस्याः नक्षत्रवाटिकायाः विरचनं कृतं यद्धि आगामि वर्षस्य जनवरी मासे प्रथमसप्ताहात् जनेभ्यः उद्घाटयिष्यते। यूनान देशस्य संसदा प्रशासनस्य सह परिष्कार कार्यक्रमः अनुमोदितः, यः अन्ताराष्ट्रियाणां ऋणदातॄणां पुरतः प्रस्तुतः। अमेरिका देशस्य सेरेना विलियम्स विम्बल्डन् टेनिस स्पर्धा मालिकायां महिलैकवर्गे विजेत्री संवृत्ता। महिला युगलवर्गे सानिया मिर्जा मार्टिन हिंगिस इत्यनयोर्युग्मेन जयश्रीः समधिगता। संस्कृताध्ययनार्थं यूरोप महाद्वीपे प्रथमम् अध्ययनपीठम् 19 शताब्दस्य 15 वर्षे पेरिस नगरे प्रारब्धम्। तस्यैव 200तमाब्दपूर्त्यवसरे तत्र आद्याचार्येण एंटोनियो लियोनार्ड शेजी महोदयेन फ्रांस देशीय भाषायां कृतस्य अभिज्ञानशाकुन्तलस्य अनुवादात् केचन अंशाः प्रस्तुताः। प्रवाहि वार्ताक्रमे भवद्भिः आलोकितं कथं फ्रांस देशे संस्कृतम् अतिशयं प्रसरति। तत्र 12,200तमात् वर्षात् आरभ्य प्रत्येकं वर्षस्य जून मासे संस्कृतदिवसः समायोज्यते। शोभनं वस्तुतस्तु न केवलं फ्रांस देशे अपितु लण्डन् नगरेऽपि ईदृशाः उत्साहवर्धकाः क्रियाकलापाः प्रचलन्ति। तत्र हि गैब्रियाला बर्नेलः प्रसिद्धानि आङ्ग्लगीतानि संस्कृतभाषायां श्रुतिमाधुर्येण गायति।
अस्मदीया सहयोगिनी सत्यप्रिया तया सह स्काइप् इति अन्तर्जालमाध्यमेन संवादं साधितवती। तर्हि प्रस्तूयते इदानीं तृतीयाख्ये प्रभागे संवादोऽयम्। तात्मानं दुष्करकाले विन्दामि तदा माता मेरी माम गच्छति प्रश्नवचनानि वदन् भवतु मम तामसि काले च सा ममोपरि एव तिष्ठति प्रश्नवचनानि वदन् भवतु 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 प्रश्नवचनानि शान्तं वद भवतु। A very warm welcome, Gabriela. It is indeed a pleasure to have you here chatting with you on Skype. Let me start by asking you the first question. Tell us how and when did you fall in love with this language Sanskrit? Well, when I went to school in St. James School in London, and I attended there from aged 4, and I remember one of our first lessons ever was a lesson in the Sanskrit alphabet, and I didn't like the thought of going to school, but when I saw that we were doing Sanskrit, I was, I think, pretty much immediately drawn to it because of the sound. So we carried on studying it from 4 to 18, and then I chose to continue studying it at university in Oxford, and then I'm currently teaching it in London, but going to do a master's and PhD. But the thing that keeps me attracted to Sanskrit is the purity of the sounds in the vowels and their capacity to basically clear my head. And when I'm working with people on Sanskrit sounding, they always connect to something bigger than their ego, and so that's why I love it. So, what does Sanskrit mean to you, and would you say that you're incomplete without the language Sanskrit? That's a difficult question but I would say the answer is yes, because it's a part of my everyday life. When I go to bed, I chant Sanskrit. When I wake up, I chant Sanskrit. And throughout the day, I have either a Sanskrit shloka that comes to mind, and I meditate with a Sanskrit bija mantra, and I chant different prayers to gods. So I think my life would be incomplete, but I love the musicality and the rhythm of the language. But further than that, I really like that when you explore the meanings of the words and you go into details, looking them up in the dictionary, finding their roots, and going into the grammar in detail, which I'm currently doing with my teacher in England, I find that the greater depth of understanding that gives you is really helpful for the chanting and the devotional side of it. Could you please chant a shloka or a mantra for us in Sanskrit? Okay, it goes Om Apyayantu Mangani Vak Pranaschakshu Shrotramato Balamindriyani Cha Sarvani Sarvam Brahma Panishatam Maham Brahma Nirakoyam Mama Brahma Nirakaroda Nirakaranamasva Nirakaranamestu Tatatmani Nirateya Upanishatsu Dharmaste Mai Santu Om Shanti Shanti Shanti. That's one from the Kena Upanishad. And another invocation from the Upanishad is the one that goes
ॐ भद्रं कर्णेऽपि शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवांसस्तनूभिर्व्यशेम देवहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्ताक्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ॐ शान्ति शान्ति शान्ति. Wow, you're chanting like an Indian Pandit. I love hearing the Indian pundits chanting. I would like to chant like them, but I have to go to India and learn more from the Indian pundit. So, Gabriela, tell us, have you ever been to India before? Yes, well, I've been twice and stayed in an ashram in Bangalore, a Gurukulam actually, where they study Sanskrit and all the boys and girls speak Sanskrit. But I would also like to come again next March and see if I could spend more time studying Sanskrit. But I'm currently working on a CD of Sanskrit songs to help people. Do let us know when you release the CD, Gabriela. Okay, I'll let you know. It will definitely, and there'll be most probably in Sanskrit a story from the Ramayana, a story from the Mahabharata, and some verses from the Gita and Upanishads. Gabriela, I'm a little curious here. What made you translate the Beatles song Let It Be into Sanskrit? Well, I was inspired because my friend sent me a link of some men, I think some musicians from India who did an Eric Clapton song in Sanskrit. And I thought, but I was inspired to do the Beatles' Let It Be because I feel a lot of the teachings that come from the Sanskrit scriptures, the Upanishads and the Gita, are helping us to fully connect to the moment in front of us. And the Beatles song Let It Be seemed to be a renunciation, a tyaga, a relinquishing of attachments to our desires and an acceptance, or sort of a letting, like the universal consciousness or the Brahman or Atman, letting it be. So I liked that, the ethos of the song, and I thought it would be a nice one and it suited Sanskrit. What is your message to the people of India who are watching you and listening to you today? Well, it's quite a lot from my heart to tell them. But I would like to say firstly, thank you for upholding this tradition in your country and for it still being so available. And thank you for sharing it with us in the West. And I'd like to say that I think you are so very lucky to come from a country which has at its heart the Vedas, which to me expound all truth and all wisdom and hold many, many answers that we seek. And to have that as part of your heritage, I think, is such a great honor. And I hope you explore that with people in your country that know the Vedas inside out and who I've been lucky enough to meet now and again. So overall, I would just like to say, may your study be good and fruitful, and may it go well. And I think there's a nice prayer for that type of thing, which is the Om Sahana Bhavatu Sahana Bhunaktu Sahaviryam Karavavahai Tejasvinavadhitamastu Ma Vidvishavahai. Om Shanti Shanti Shanti. And that would be all I have to say for now. Thank you is the main thing. It was a great pleasure talking to you, Gabriela. Thank you very much for talking to us and hope to see you soon. Thank you. Okay, thank you. I look forward to seeing you soon. Okay, thanks. Bye. अस्माभिः आलोकितं यत् गैब्रियला बाल्यकालादेव संस्कृतं प्रति रुचिमती आसीत्। न केवलं गीतानि अपि चेयम् उपनिषद्मन्त्राश्च माधुर्येण उच्चारयति। इत्थम् इयं लण्डननगरे संस्कृतस्य विस्ताराय महत् कार्यं साधयति। सम्प्रति वयं व्यासः इत्याख्यं तृतीयप्रभागं प्रति अग्रेसरामः। संस्कृतवाङ्मये नैके दृष्टान्ताः विद्यन्ते यत्र शब्दविन्यासेन एव कवयः चमत्कृतिम् आपादयन्ति।
पश्यामस्तावत् शब्दक्रीडायाः निदर्शनमिदम्। दाददो दुद्ददुत्तादि दाददो दूददि ददोः दुत्तादं दददे दुद्दे दादा दददो ददः। श्री कृष्ण जो वरदायक हैं, दुर्जन विनाशक हैं, पवित्र करने वाले हैं, निर्बलों के कष्ट को दूर करने वाले हैं, उन्होंने शत्रु पर अपनी पीड़ाकारक बाण का प्रहार किया। श्रुतास्माभिः अनुप्रासालंकृता दीनबंधु दामोदरस्य स्तुतिपरा दवर्ण-मात्रयुता मनोहरा पदावली। संस्कृतेन सह उर्दू हिंदी भाषयोः अन्तः सम्बन्ध विषये प्रोफेसर अब्दुल बिस्मिल्ला महोदयेन सह अस्मदीयः वार्ताहरः युवराज भट्टराई सद्य एव सम्भाषणं व्यदधात्। आप हिंदी, संस्कृत और उर्दू के प्रतिष्ठित विद्वान हैं। आप बताइए कि संस्कृत, हिंदी और उर्दू में क्या अंतः संबंध है? भारतीय भाषाओं के जन्म और विकास में संस्कृत भाषा का बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है। उर्दू एक ऐसी भाषा है जिसमें व्यापक रूप से अगर आप देखें तो उर्दू में अरबी और फ़ारसी के शब्द हैं, बहुत सारे शब्द हैं, और कुछ तुर्की भाषा के शब्द भी हैं। खुद उर्दू शब्द जो है वो तुर्की भाषा के शब्द है। लेकिन उर्दू भाषा में भी ऐसे तमाम शब्द साहित्य के अंतर्गत प्रयुक्त हुए हैं जो संस्कृत से संबंध रखते हैं। और मैं आपको बता दूं कि ख़ास तौर से जिसे हम दक्कनी हिंदी या दक्कनी उर्दू, दोनों नाम उसके हैं, हाँ, जिसका विकास जो है वो गोलकुंडा राज्य में हुआ, जहाँ वली दक्कनी और कुली कुतुब शाह जैसे बहुत बड़े शायर हुए। और उनकी शायरी को अगर आप देखें तो उनके यहाँ बहुत सारे ऐसे शब्द मिलेंगे जो संस्कृत के हैं, हाँ? या तो मूल संस्कृत के शब्द मिलेंगे या वो जो हिंदी पन जो आ गया है भाषा में, या तो वो मिलेंगे आपको। इसके अलावा आप देखिए कि अब अमीर खुसरो तो मूलतः फ़ारसी के शायर थे, लेकिन हिंदी में भी कविताएं लिखी उन्होंने। और आप देखिए कि फ़ारसी में वो गज़ल लिख रहे हैं और उसमें संस्कृत के शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं। उनकी मशहूर गज़ल है ज़िहाल मिस्की मकुन तगाफुल, फिर कहते दुराए नैना बनाए बतियाँ। अब नैना जो है ये तो नयन है ना, तो ये तो संस्कृत है, बिल्कुल है। तो देखिए आधी लाइन जो है वो फ़ारसी में है और आधी हिंदी में है, जिसमें एक शब्द नयन जो है ये संस्कृत का शब्द है कि नहीं। 100 साल पहले मीर तकी मीर हुए हैं। मीर तकी मीर के यहाँ तो हिंदी के शब्द जगह जगह वो आते हैं और संस्कृत के शब्द हैं, और ऐसा लगता है जैसे नगीने की तरह टाँक दिए गए हैं। उनका एक बहुत मुश्किल सा शेर है सुनने में, लेकिन उसमें एक शब्द है संस्कृत का, देखिए आप, है उसके हरफे ज़ेरे लबी का सबों में जिक्र, है उसके हरफे ज़ेरे लबी का सबों में जिक्र, क्या बात थी कि जिसका ये विस्तार हो गया। क्या बात। अब विस्तार जो है शब्द संस्कृत का है जी। तो अब इससे आप अनुमान लगा सकते हैं कि संस्कृत, हिंदी और उर्दू तीनों भाषाएं, संस्कृत बहुत पुरानी भाषा है, उसके बाद हिंदी और उर्दू का डेवलपमेंट एक साथ होता है, एक साथ इनका विकास होता है। और इसीलिए हिंदी में तो बहुत सारे शब्द हैं, उर्दू में भी हैं, उतने नहीं हैं, लेकिन फिर भी बहुत सारे शब्द प्रयुक्त होते हैं। ज्ञातं भवद्भिः यत् कथम् इमाः भाषाः संस्कृतेन अन्तः सामीप्यं सन्धारयन्ति, भाषिक सामञ्जस्यं जनेषु मितः सौहार्दं सामरस्यं च संवर्धयितुमपि महतीं भूमिकां सन्धत्ते। प्रस्तूयते इदानीं चतुर्थप्रभागः परिधिः। वार्तावल्याः प्रथमाङ्के घोषित स्पर्धायाः विजेतुः नाम अद्य उद्घोष्यते। ज्योतिः किमेतत्? भवत्या तु स्पर्धा विजेतुः नाम उद्घोषणीयं, परं भवती तु स्वयमेव स्पर्धा विमुग्धा इव प्रतिभाति। आम्, किमर्थं न?
अस्माभिः नानाजनेभ्यः अस्य गीतस्य मनोहराः समीचीनाः सार्थाः संस्कृतानुवादाः अधिगताः। तर्हि किमर्थं विलम्बः? अस्तु, अद्यतनः विजेता वर्तते पुणेनगरात् श्री चिन्मय फड्के। भवता च अधिगम्यते कॉफी पानार्थम् उपायनमिदम्। चिन्मयो हार्दिकवर्धापनानि। शिखरवर्षपतत्ययं दहति दहति हृदयमिदम् आर्द्रे अर्धस्मिन् ऋतौ कथमेवानलस्योष्ण्यं शिखरवर्षपतत्ययं दहति दहति हृदयमिदम् आर्द्रे अर्धस्मिन् ऋतौ कथमेवानलस्योष्ण्यं शिखरवर्षपतत्ययम्। वयं सानन्दं स्वकीयदर्शकान् सूचयामः यत् मंजिल इति चलचित्रस्य गीतेऽस्मिन् अभिनयरता अभिनेत्री मौसुमी चटर्जी इत्यनया सह अस्मदीयः संवादः संवृत्तः तथा तया च विज्ञापितम्। कॉलेजों में इसका ये संस्कृत लैंग्वेज कंपल्सरी रखना था, क्योंकि हमारे देश में इतने श्लोका है, मंत्र है जो हम पूछते हैं या शादी ब्याह में हम जो पढ़ाते हैं तो वो संस्कृत में ही होते हैं, और वो क्योंकि आम जनता नहीं समझ पाती तो उसका जो महत्व है वो हमारे दिमाग में रजिस्टर नहीं होते। ये बहुत अच्छी बात है कि आप लोग इस संस्कृत को आप आगे बढ़ा रहे हैं, लोगों को जानकारी दे रहे हैं, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और ये जो आप रिमझिम गिरी गाना जो आप उनको अनुवाद करके सुनाएंगे वो भी बहुत ही अच्छी बात है। मंजिल पिक्चर बासु चटर्जी का था और वो जो गाना अमिताभ बच्चन और मौसमी चटर्जी के ऊपर पिक्चराइज किया गया है वो एकदम नेचुरल है, बारिश भी नेचुरल है। हमें तो गाना सुनाई भी नहीं दे रहे थे, खाली हम एक बार करके गाना सुनते थे, फिर जाके किधर हमें ड्रॉप कर देते थे रास्ते में, गेटवे ऑफ इंडिया में। हम लोग घूम घूम के वो गाने का जो भी मतलब है वो हमने किया है और डायरेक्टर ने उसी को ही पिक्चराइज किया है। गतसप्ताहे अस्माभिः आराधना चलचित्रस्य गीतमेकं प्रदर्शितमासीत्। स्मर्यते किं? तस्य संस्कृतानुवादप्रेषणाय अद्य हि अन्तिमावधिः। गीतं तत् पुनरवलोकयन्तु। बागों में बहार है, कलियों पे निखार है, ओ तुमको मुझसे प्यार है, बागों में बहार है। गेयतानुकूल विशुद्धानुवाद विषयिण्यः अस्याः स्पर्धायाः विजेतुः नाम सचित्रं जुलाई मासस्य 19 दिने प्रदर्शयिष्यते। वार्तावलीक्रमे भूयोऽपि सूच्यते यत् एतत् कार्यक्रमविषये भूरिशः प्रतिक्रियाः अधिगम्यन्ते। सत्यम् इमास्तु अतितराम् उत्साहवर्धिन्यः आयत्यामपि भवद्भ्यः प्रतिक्रियाः अपेक्षामहे। एतदर्थम् अस्मदीयम् अन्तर्जालीयसम्पर्कसूत्रमस्ति ddnewsforsanskrit@gmail.com।
सममेव पत्रप्रेषणाय अस्माकं सम्पर्ककेन्द्रमस्ति। कक्षक्रमाङ्कः 18+400 DD न्यूज़, टावर B, दूरदर्शन भवनं, कोपर्निकस् मार्गः, मंडी हाउस, नवदिल्ली 110001। वार्तावली संस्करणमिदं समाप्नोति साम्प्रतम्। आगामी रविवासरे पुनः मिलिष्यामः। तावदवधये भवतु शुभं मंगलम्। नमस्कारः।